Hello viewers, welcome back to another video tutorial of PM Biopassing Academy, and today we're gonna discuss about the rest of the questions of digestive system. So previous class रे आमे 60 MCQs discuss करथिले and मु कहिथिली 100 plus MCQs मु prepare करची. So previous video रे आमे 60 question तो discuss कर देथिले. वर्तमान आमे 61 question नु बाकी last पर्यंत discuss करिबा. ताले start करिबा हम 61 number question. A baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? This is very easy. Premolars. Next, number 62. Fructose is absorbed into the blood through mucosa cells of intestine by the process is called active transport, facilitated transport, simple diffusion, or co-transport mechanism. I have already told about you. Fructose is absorbed into blood through the mucosa cells, not by serosa, not by submucosa, only by mucosa cells of intestine by the process of facilitated transport. Next, number 63. Which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? Ileocecal valve, sphincter of OD, pyloric sphincter, or semilunar valve? And the answer is sphincter of OD. जो मैंने भी देखी ना duodenum रा, I mean small intestine रा video, liver रा video, accessible digestive system रा video, से मैंने जाके देखी दियंतु, मुताले link भी दे देबे, जाके से मैंने देखी देबे. Okay. Next 64. The primary dentition in human differs from permanent dentition in not having one of the following type of teeth dash: canine, molars, premolars, or incisor. And the answer is premolars. Next, number 65. Anxiety and eating spicy food together in an otherwise normal human may lead to dash: indigestion, jaundice, diarrhea, vomiting. And this is very easy. Indigestion. 66. Where do certain symbiotic microorganisms normally occur in human body? Cecum, oral lining and tongue surface, vermiform appendix and rectum, or duodenum? I've already told this. Cecum is the only part of large intestine in which symbiotic microorganisms like E. coli, Escherichia coli occur inside the human body. Next, number 67. Which of the following gastric cells indirectly Which of the following gastric cells indirectly help in erythropoiesis? Goblet cells, chip cells, mucous cells, or parietal cells? And the right answer is parietal cells. Parietal cells are help in erythropoiesis. Next, number 68. Which of the following options best represents the enzyme composition of pancreatic juice? Amylase, peptidase, trypsinogen, renin, amylase, pepsin, trypsinogen, maltase, peptidase, amylase, pepsin or renin, and lipase, amylase, trypsinogen, and procarboxypeptidase. And the right answer is lipase, amylase, trypsinogen, and procarboxypeptidase. Next, number 69. In stomach, gastric acid is secreted by parietal cells, acidic cells, peptic cells, or gastrin secreting cells. And the correct answer is parietal cells. Gastric acid of stomach are secreted by the parietal cells. Next, number 70. Diastema refers to gap between the teeth, gap between tongue and teeth, ciliary cells on alimentary canal, or cell lining along pharynx. And diastema refers to the gap between the teeth. Gap between two teeth is called diastema disease. Next, number 74. In human, teeth are dash: homodont and polyphyodont, heterodont and polyphyodont, homodont and dysphyodont, or heterodont and diphyodont. In case of human, teeth are heterodont type and diphyodont type. Next, number 75. Anemia disease is caused by deficiency of sodium, magnesium, calcium, or iron. And the correct answer is anemia disease is caused by the deficiency of iron. That means the deficiency of blood causes anemia disease. Listen, blood रे कौन थाए? हिमोग्लोबिन प्रेजेंट थाए एंड हिमोग्लोबिन ना कौन थाए? आयरन प्रेजेंट थाए. जदि आयरन ना डेफिशिएंसी होउची तो हिमोग्लोबिन ना डेफिशिएंसी हबो. हिमोग्लोबिन कम देखा जीवो. हिमोग्लोबिन कम देखा गेले तार साइज भी छोटो हो जीवो एंड हिमोग्लोबिन डेफिशिएंसी देखा गेले हमर आरबीसी रो साइज मध्य छोटो हो जीवो. आरबीसी मध्य कम अमाउंट रे देखा जीवो. जते बेले हमर ब्लड रे आरबीसी रो अमाउंट कम देखा जाए सेते बेले हमें ताकू एनीमिया डिजीज बोली कहि थांती. सो अल्टीमेटली एटी जति आयरन
आयरन डेफिशिएंसी होची ताहले एनीमिया डिजीज हबार चांस अच्छे ना कि सोडियम ना कि मैग्नीशियम ना कि कैल्शियम. सो करेक्ट आंसर इज आयरन, दैट इज Fe. नेक्स्ट नंबर 76. From which of the following pepsin is secreted? Lung, stomach, salivary gland or sebaceous gland? This is very easy. From stomach, pepsin is secreted and pepsin is a protein digesting enzyme. Next number 77. Absorption of glucose and amino acid occur by dash. Passive absorption, active absorption, simple diffusion or facilitated diffusion. And the correct answer is absorption of glucose and amino acid occur by active absorption. Renin converts dash casein to casinogen, casein to procasinogen, procasine to casein or casein to procasein. And the correct answer is casein to casinogen. Casein casinogen कौन आमे next class रे देखिबा. एबे पाई मुझे तो डिस्कस करूची both digestion and absorption नो questions. So renin होची गोटे प्रकार मिल्क प्रोटीन जे कि casein नु casinogen को कन्वर्ट करथे है. So एठी आमे देखुचंते कोन कोन सब ऑप्शंस रही छि casein to procasein, casein to casinogen, procasein to casein or casein to procasein. And the correct answer is casein to casinogen. Casein to casinogen कन्वर्ट करिबारे रेनिन ही एकमात्र एंजाइम जे कि हेल्प करथाय. नेक्स्ट 79. Which vitamin should not be stored? Calciferol, niacin, retinol or ascorbic acid. And ascorbic acid is the only acid which is the only vitamin which cannot be stored inside our body or inside the muscles. Next, number 80. Enterogastron is dash. It is a hormone, it is an enzyme. If it is a hormone, it is secreted by gastric mucosa. If it is an enzyme, then enzyme secreted by gastric mucosa. If it's a hormone, then this hormone secreted by duodenal mucosa. And this is secreted by endocrine gland related to digestion. So enterogastron is a hormone which is secreted by duodenal mucosa. What is duodenal mucosa? Duodenum रे विभिन्न प्रकार लेयर्स देखा जाए जमती कि म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, सीरोसा एंड मस्क्युलारिस लेयर. एंड ए म्यूकोसा लेयर रे जहाँ को हमें सबुठु इनर मोस्ट लेयर बोली कहउचंती डिओडेनम रा सबुठु इनर मोस्ट लेयर रे गोटे प्रकार हार्मोन सिक्रेशन हुए जहाँ को एंटेरोगैस्ट्रॉन बोली कहा जाए. एंटेरोगैस्ट्रॉन गोटे एंजाइम नुहे, ये गोटे प्रकार हार्मोन. ओके, नेक्स्ट 81 क्वेश्चन. Gastric juices of infants contain maltase, pepsinogen, renin, nuclease, pepsinogen, lipase, pepsinogen, lipase, renin or amylase, renin and pepsinogen. So gastric juice in infants contain pepsinogen, lipase and renin. Next, number 82. Which of the following statements is not correct dash? Brunner's gland are not present in submucosa of stomach and secrete pepsinogen. This is not correct. Why? Because Brunner glands are present in submucosa of stomach and they secrete pepsinogen. So here is the incorrect statement is option A. Next, number 83. Part of bile juice useful in digestion is dash. Bile pigment, bile matrix, bile salt or none of the above. And the part of the bile juice is useful in digestion is bile salt. And this bile salt get absorbed by small intestine, ileum part of small intestine. Next, number 84. Which of the following is true for vitamin C? Also called ascorbic acid, also called fumaric acid, obtained from citrus fruits, or both A and C are correct. Both A and C are correct. Why? Because vitamin C are called otherwisely ascorbic acid, and we know all that vitamin C is obtained from citrus fruits like lemon, orange. These are some citrus fruits from which vitamin C is occurred. Next, number 85. Which of the following pairs is characterized by swollen lip, thick pigmented skin of hands and legs, or irritability dash? Thiamine, beriberi, protein, kwashiorkor, nicotinamide, pellagra, iodine, goiter. And the correct answer is nicotinamide deficiency causes pellagra. Next, during prolonged fasting occurs dash. First, fats are used up followed by carbohydrates from liver and muscles and proteins in the end. Next, first carbohydrates are used up followed by fat and proteins towards the end. Next, first lipid digested or first lipid used up followed by protein and carbohydrate toward the end, or none of the above. And during prolonged fasting, first carbohydrates are used up followed by fat and proteins towards the end.
व्हाई कहीं आम जानते सब बेले आम बॉडी रे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अधिक थाए एंड कार्बोहाइड्रेट रु ही ग्लाइकोजेन सिक्रेट होकर स्टोर्ड फॉर्म रे थाए जितेबाला आम बेसी समय फास्टिंग कर उपवास रोचंती तो आम बॉडी रे जो स्टोर्ड ग्लाइकोजेन अच्छी से ग्लूकोज को कन्वर्ट हम ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज को कन्वर्ट हम एंड से आमको एनर्जी प्रोवाइड करुच्ची सो ग्लाइकोजेन कहार फॉर्म ग्लाइकोजेन कार्बोहाइड्रेट रो फॉर्म जिते जितेबाला आमर कार्बोहाइड्रेट रो कंटेंट सरी सरी आसीबा बॉडी रु एक्चुअली सरे तो नहीं किंतु प्रथमे कार्बोहाइड्रेट रु जो ग्लाइकोजेन स्टोर होइतिबा से ग्लाइकोजेन प्रथमे यूज्ड हबो देन आम बॉडी रे थिबा स्टोर्ड फैट जे कि मसल्स एंड लिवर रे रोची से माने धीरे धीरे ब्रेक डाउन हेबे एंड लास्टली प्रोटीन ब्रेक डाउन हेकी हमको एनर्जी दबो सो एठी प्रथमे क्वेश्चन अनुसार आंसर हम जे प्रथमे कार्बोहाइड्रेट यूज होची देन फैट यूज होची देन प्रोटीन यूज होची सो ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट यूज्ड अफ फॉलोड बाय फैट एंड प्रोटीन्स टुवर्ड्स द एंड लास्ट रे प्रोटीन ही हमर यूज होची सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट नंबर 87 curdling of milk in small intestine occurs due to eruption chymotrypsin trypsin or renin and I have already told about you this is minimum 50 times this is due to renin protein why पेप्सिन एंड रेनिन ए दीटा ही होचंती हमर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन सबु प्रकार प्रोटीन मान को डाइजेस्ट करे एक्सेप्ट सेल्युलोज बट रेनिन एकमात्र एंजाइम जे कि मिल्क को डाइजेस्ट कराए सो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करे पारुथबार एंजाइम होची रेनिन जितेबाला आम बॉडी भितर मिल्क कर्डलिंग होची मिल्क डाइजेशन होची सेतेबाला रेनिन एकमात्र एंजाइम ही प्रेजेंट थाए एंड यार गोटे फैक्ट भी मुझे कही जितेबाला छोट पिला माने थांती बा छोट बाछुरी थाए सेमानक बॉडी भितर रेनिन कंसंट्रेशन रेनिन मात्रा यथेष्ट अधिक थाए जो कि सेमानक बॉडी रे मिल्क बा मिल्क जातीय फूड शीघ्र डाइजेस्ट हो जाए जितेबाला आम बड़ हो जाती जिते बड़ हो जाती आम बॉडी रे रेनिन कंसंट्रेशन सेते कमी कमी जाए जो द्वारा कि छोट पिला मानक तुलन में आम बॉडी रे मिल्क टा बेसी शीघ्र डाइजेस्ट हो पारे नाही सो मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम किए रेनिन दैट्स व्हाई रेनिन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट नंबर 88 विटामिन के डेफिशिएंसी कॉजेस दिस इज वेरी इजी ब्लीडिंग डिजीज कहीं ना विटामिन के कौन करुच्ची बाइंडिंग करिबारे हेल्प करुच्ची क्लॉटिंग करिबारे हेल्प करुच्ची जदि विटामिन के हमर डेफिशिएंसी रोची तार हमर ब्लीडिंग हबार बहुत चांसेस रही दैट्स व्हाई विटामिन के डेफिशिएंसी कॉजेस ब्लीडिंग डिजीज नेक्स्ट नंबर 89 alimentary canal wall contains dashed striated muscles striped muscles smooth muscles or none of these and the right answer is smooth muscles alimentary canal walls contains smooth muscles next number 90 the vitamin which is essential for blood clotting is vitamin A C B or K number 88 रे हम डिस्कस करथिले जे जदी विटामिन के रे डेफिशिएंसी होची ताहले ब्लीडिंग डिजीज होची ताहले ब्लड क्लॉटिंग कहा द्वारा होची विटामिन के द्वारा होची जदी विटामिन के बॉडी रे सफिशिएंट अमाउंट रे प्रेजेंट रहइबा ताहले ब्लड क्लॉटिंग हे परिबो जदी सफिशिएंट अमाउंट रे प्रेजेंट न रही कि विटामिन के रे डेफिशिएंसी देखा होची ताहले ब्लीडिंग हबो सो एठी हमर आंसर कोन हबो विटामिन के द ओनली वन विटामिन दैट इज विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग नेक्स्ट 91 कुफर सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस इज ओबियस लिवर कुफर सेल्स माने केवल लिवर रे ही देखा जानते ना कि पैनक्रियाज रे ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन रे ना कि थायराइड रे सो नंबर 92 The beriberi is a paralytic disease caused by the deficiency of vitamin 1 which is thiamine. It was discovered by Frank, Esman, Foxon or Stanley and beriberi was first discovered by Esman. Next number 93 protein deficiency leads to kwashiorkor, creatinism, marasmus or both A and B and protein deficiency causes kwashiorkor and creatinism both. So the correct answer is option D that is both A and B are right. Next number 94 which of the following represent bile salts bilirubin and biliverdin hemoglobin and biliverdin sodium glycocolate or taurocolate and bilirubin and hemoglobin glycocolate that means sodium glycocolate and taurocolate ए दीटा ही होचंती मेन कंटेंट जे कि बाइल सॉल्ट रे ही प्रेजेंट थांती एंड बाइल सॉल्ट को बेसी कंसंट्रेट करिबारे मध्य हेल्प करथांती सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट
से आमर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर कि बाइल सल्ट रे को माने प्रेजेंट थांती सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट ये बहुत 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 इंपोर्टेंट प्लीज मन रखिबा को जे सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट बाइल सल्ट रे ही प्रेजेंट थांती एंड बाइल सल्ट केतेबेले बेसी कंसंट्रेट हेते जेतेबेले एमानकर कंटेंट बाइल सल्ट रे बेसी अधिक थिबो एंड जेते अधिक गॉल ब्लैडर रो कंट्रैक्शन हबो सेते अधिक बाइल सल्ट कंसंट्रेट हबो ओके नेक्स्ट 95 Esterase belongs to transferase, hydrolytic enzyme, oxidation reduction enzyme or carboxylating enzyme. And esterase belongs to hydrolytic enzyme. Next number 96. Kwashiorkor is a genetic disorder due to vitamin deficiency, due to carbohydrate deficiency or due to protein deficiency. And Kwashiorkor is a protein deficiency disorder. That's why option D is the correct answer. Next number 97. The main function of prolonged chewing is to rupture membranes, connective tissues, muscle bundles or cell wall. And the main function of prolonged chewing is to rupture cell walls. Next, secretion of pancreatic juice is stimulated by secretin, enterokinase, gastrin or enterogastrin. And the correct answer is secretin. मु सिक्रेटिन विषय भी कही जो स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम विषय पढ़ाऊली से कही डिओडेनम लाइनिंग रे जो सेल माने प्रेजेंट थांती से माने सिक्रेट करी सिक्रेटिन नामक एक एंजाइम बा हार्मोन से माने कौन करती ना पानक्रियास को जाइकरी पानक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करेंगे पानक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करेंगे सो से ना है सिक्रेटिन Which of the following cannot be isolated from plants? Vitamin B12, niacin, riboflavin or vitamin C? And the correct answer is vitamin B12. Next, number 100 question. Which one of the following pairs of the food components in humans reaches the stomach totally undigested? Protein and starch, starch and fat, fat and cellulose, starch and cellulose. This is very easy. Starch and fat. Starch and fat are the food components in humans reaches the stomach totally undigested. Next, HCl is secreted by dash. Zymogen cells, oxyntic cells, peptide cells or none of the above. And HCl is secreted by oxyntic cells of stomach. Next 102. Disease caused by deficiency of vitamin C is, this is very easy. आम स्कूल बेलू पढ़ी पढ़ी आसचंती जे स्कर्बी होची vitamin C disorder. बेरी बेरी vitamin B जो होता है vitamin B रो deficiency रे बेरी बेरी होता है vitamin C रो deficiency रे स्कर्बी होता है night blindness that means अंधार कणा vitamin A deficiency रहता है and pellagra vitamin D deficiency रे होता है. So here the correct answer is option B, that is scurvy is the disease which is caused by deficiency of vitamin C. Next 103. Cholecystokinin, that is CCK, stimulates dash pancreas, secrete bile, gallbladder, none of this. And the correct answer is gallbladder. Cholecystokinin secrete हुए कोटू secrete होता है lining of duodenum रो and a gallbladder को जाके contract करेबारे help करता है. कहीं contraction करे थे कहीं ना मैं जानी जानती digestion ने हमको खाद्य बेसिक हवा निहाती दरकार जे पर्यंत खाद्य एसिड रो बेसिक को कन्वर्ट न हेची से पर्यंत खाद्य भल से डाइजेस्ट हे परिबो नाही. जेमते secretin सिक्रेट होतला डिओडेनम रो लाइनिंग रू एंड पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करिबारे हेल्प करतुला सेमती डिओडेनम रो लाइनिंग रू बाहरिबो कोलेसिस्टोकाइनिन दैट इज सीसीके एंड ये लिवर रो गॉल ब्लाडर को जाइकी कंट्रैक्शन करेबो. गॉल ब्लाडर जेते कंट्रैक्ट हवा बाइल जूस बाइल सॉल्ट सेते अधिक कंसंट्रेट हवा एंड कंसंट्रेशन अधिक हवा द्वारा जेतेबेले ये डिओडेनम को आसीबो खाद्य पाखरे पहुंचीबो काइम सहित मिसिबो सेतेबेले बाइल सॉल्ट संस्पर्श रे आसीकी काइम मध्य बेसिक रे कन्वर्ट हे जिवो जद्वारा के डाइजेस्ट बहुत शीघ्र हे परिबो. जो माने वीडियो को नुआ देखुचंती काइम काइल जानि नांती प्लीज प्रथमे क्लास करंतु तापरे आसंतु MCQs करबा पई. MCQ संगे संगे फटाफट हे जिवो वेरी इजी एंड वेरी इंपोर्टेंट. ओके ताले मूव करबा हमर नेक्स्ट 104. Kwashiorkor and beriberi are communicable diseases, infectious diseases, deficiency diseases or none of the above. आमे एबे ही डिस्कस करथिले Kwashiorkor and beriberi ए माने होचंती deficiency diseases, that means protein deficiency, vitamin deficiency diseases. Okay. Next our last question. Bile acids are dash carbohydrates, steroids, proteins and fats. And bile acids are steroids. These are not carbohydrates, not proteins, not fats. These are only steroids. And these bile acids are helps in digestion.
ओके ताले ये आम आमर 105टा क्वेश्चन कंप्लीट कले आई होप कि समस्त को मिनिमम 50 ରୁ 60 क्वेश्चन आसीथिबा को मानकर केतेटा क्वेश्चन ठीक है प्लीज कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जनइबे एंड जदि कौन क्वेश्चन ने डाउट रहीगला ताहले कमेंट बॉक्स रे लिखिबे एंड जो जिनस बुझी होनी मु कहि नेक्स्ट क्लास रे बुझेबी एब्जॉर्प्शन पढ़िला बेले बुझेबी नेक्स्ट आमे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एब्जॉर्प्शन बुझिबा एंड सेई टाइम रे बहुत इंटरेस्टिंग जिनस अछि बहुत किछि जिनस जानिबा को अछि जहा कि बीएससी वालंकर बहुत 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 इंपोर्टेंट सेमिस्टर रे अछि फोर्थ सेमिस्टर रे ही अछि सो नेक्स्ट क्लास रे आमे देखिबा हमर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ताले जदि वीडियो भल लगुच एमसीक्यूज जदि इंटरेस्टिंग लगुच ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट मु कहि आछि आरंभ रु ताले प्लीज करंतु बारंबार सॉल्व करंतु थरे न होची दिथर न होची बारंबार सॉल्व करंतु नोट्स रे लिखंतु जेते लेखिबा सेते प्रैक्टिस हबो सेते जिंस मने भी रहिबो सुनी देले देखि देले गोटे जिंस मने रहनी जेते लेखा प्रैक्टिस हबो सेते मने रहिबो ताले लिखंतु प्रैक्टिस करंतु एग्जाम रे समस्ते भलो करंतु एंड लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु आपनकर जेते भी सांग अछंती जूनियर अछंती सीनियर अछंती समस्त पाखु शेयर करंतु थैंक यू।